Hello student, how are you? How is going your study? Very well, fantastic, marvelous, fabulous, बहुत बढ़िया. So dear student, today is our topic is limitation of dimension analysis. Yes, there is some limitation of dimensional analysis. First is by this method, the value of dimensionless constant cannot be determined. We have observed that formula of time period for simple pendulum. What is that? T is equal to 2 pi root L upon G. Say yes or no. When we derive this formula by using dimensional analysis, we got that T is equal to K root L by G. Got the point? So we couldn't find the value of K. We have derived this T is equal to root L by G, but we are not eligible to find the value of K. So we have to mention that our sentence was there. The value of K is determined by experiment, and that is putting K is equal to 2 pi. Got the point? ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया गया था, डायमेंशनल एनालिसिस इसका पता नहीं लगा पाया था. ओके, सो वी कांट से बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस the value of k is equal to 2 pi because it is a dimensionless. So dimensional analysis will be fail here because there is no dimension, so he couldn't say anything. Got the point? Very good. There is another formula of frequency in tuning fork. F is equal to on a string is given by 1 by 2L root tension upon mu. Mu is the linear mass density there. Okay, don't worry, घबराइए नहीं, सब सीखेंगे. In this formula you can't say whether there will be 2 or 4 or 1. And this is determined by experimentally. Say yes or no. Take another example. Simple equation. S is equal to ut plus half at square. We can check dimensionally whether it is a correct or not, but we can't say whether there will be half, 1, 2 or another numerical value because numerical value does not have any dimension, so dimensional analysis will fail here telling the value of numerical constant. Got the point? यहाँ पे dimensional analysis numerical constant की value नहीं बता पाएगा जब तक उसका कोई dimension नहीं होगा. Got the point? हमें नहीं पता कि यहाँ पे हाफ पाएगा, सर ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है. यहाँ पे हम केवल ये चेक कर सकते हैं बाय डायमेंशनल एनालिसिस दैट द डायमेंशन ऑफ एस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यूटी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एटी स्क्वायर. गॉट द पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड. सो लेट्स रेडी फॉर नेक्स्ट. Yes dear student, we have another limitation of dimensional analysis, that is by this method the relations containing trigonometric functions, okay, and exponential functions and logarithm functions cannot be determined, cannot be proved, cannot be derived from the dimensional analysis. How? Let's see. This is the charge Q is equal to Q naught e raised to power minus t upon RC. This is the equation of charging in a, you can say this is the equation for capacitor. Okay, at a time t, the charge in a capacitor is given by this equation. We can check whether is it dimensionally correct or not by using dimension analysis, but we can't prove it, we can't determine, we can't derive by using dimensional analysis because it is having exponential function. Got the point? Or it is a dimensionless. Exponential function is dimensionless. We have already talked about in earlier lectures. Okay, now what about the trigonometry? Y is equal to a sine omega t. This is the some simple harmonic motion equation. The amplitude omega is angular speed, or you can say angular frequency. So it is containing sine, it is a trigonometric function,
we can check whether it is a dimensionally correct or not, but we can't derive from dimensional analysis this it, because sine is trigonometric is a dimensionless quantity, so we can't say that it should be sine omega t, tan omega t, because there are a lot of trigonometric functions. All are, you can say cot omega t, you can say cosec omega t. So we can't say whether which one is correct here, Got the point? You can't say. All these trigonometric functions are dimensionless. How will you judge that in this equation which one is fit? You can't say by using dimensional analysis. Got the point? So dimensional analysis will fail here. Or if you talk about the logarithm work done in isothermal, you can say PV nRT, or you can say nRT ln V final upon V initial. So this is the logarithm function. Logarithm function is a dimensionless, so you can't say whether it will be log, ln, logarithm. Two types of 10 base log. It may be 10 base log, it may be natural log, e base. Got the point? E base also dimensionless and 10 base also dimensionless. It is ln. If you are writing ln, then it is ln base, e base. If you are writing ln, it is a natural log, it is a e base. Got the point? In basic classes we already talk about it. If you didn't watch, please go to basic class of the physics and watch that. Yes. Next move करते हैं. Yes. Yes, dear student, we have another limitation of dimensional analysis. This is saying that this method cannot predict about the sum and difference sign. What is the meaning of that? Let's see. You have s is equal to ut plus half at square, or you also can write s is equal to ut minus half at square. Now tell me which one is correct and which one is wrong. Okay, so dimensional analysis can't say whether you will use positive sign or negative sign, sum or difference. It can't say it. Whether it can check the dimension of s and dimension of ut and dimension of at square will be correct or wrong. Okay, ये check कर सकता है कि dimensionally it is correct or not, but it can't say whether it will use positive sign or negative sign. Got the point? Yes. Next चलते हैं. Yes, dear student, there is another limitation. It is saying that it is not useful to derive formula of a physical quantity which depends on more than 3 physical quantities. I have written this is in small, physical quantities. Okay, let's say there is a formula of time period in mechanics. In mechanics, I am talking about in mechanics. Okay, I am talking about in mechanics. If a physical quantity, say time period, depends on more than 3 quantities like moment of inertia, mass, g, gravitational acceleration, and length L. So you couldn't derive by using the dimensional analysis. If you can, please try and say me. Okay, then what is the actual formula of it? Actual formula of it is given by the I upon mgl, and that is a constant 2 pi, you know. Got the point? So this formula we couldn't derive by using the dimensional analysis, but we have derived 2 pi root में l upon g. Got the point? ये हम derive कर चुके हैं, because there is only two physical quantities on which time period depends, l and g. But in this formula, time period depends on more than three physical quantities: moment of inertia I, mass, g, gravitational acceleration, and length. So it is very difficult to derive that time period relation in the form. So there are the limitations we have discussed successfully and with examples. I hope you enjoy. Now move further a step towards the measurement and you will enjoy. So be ready and be active. बने रहिएगा, like जरूर करें. Yes, dear student, आ जाइए. Now we are going to talk about the
section, measurement and errors. Okay, measurement and errors. In this we should know some basic things like that. Prefixes. What are the prefixes? Somewhere you found that 1 kilonewton. So what is the meaning of 1 kilonewton? This is the force 1 kilonewton. 1 kilo means होता है 1000 Newton. If we talk about pressure P is equal to 1 megapascal. 1 megapascal. So what is the meaning of mega? Mega means 10 to power 6 pascal, or you can say 1 million pascal. Got the point? Generally you can say length in centimeter, so that will be 1 centimeter means centi means 10 to power minus 2 meter. So these are the prefixes. And Newton, Pascal, meter are the units. We already talked about the units, SI units, CGS unit, FPS unit. Got the point? Very good. हम बात कर चुके हैं सभी सिस्टम्स की. अब बात हो रही है कि जो प्रीफिक्सेस हैं वो क्या हैं. सो रेडी हैं आप लोग? यस. प्लीज मैजिक वाइप दिस. Yes, dear students, these are the prefixes. Let's start. 10 raised to power 1, you know 10. That is known as Deca. DACA, Deca, and it is a symbol having DAC or somewhere it is in capital D. Got the point? Deca or somewhere it written by DA. Got the point? DA. I think you hear about that decade. What is the meaning of decade? Yes, what is the meaning of decade? Decade means a period of 10 years. A period of 10 years. Am I right? So from that is the Deca. That is the Deca. Ed means time. Got the point? तो यहीं से लिया गया है. This is the prefix. तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं. Deca means 10. 10 raised to power 1. Got the point? Next देखिएगा 10 raised to power 2. Hecta. What is this? Hecta. Somewhere some people wrote this hecto, and symbol is small h. Hecta. What's the point? Hecta. Yes. Hecta. 10 raised to power 3. 1000. That is kilo. 1 kilogram. 1 kilogram. So that is the 1000 gram. Got the point? 1 kilogram consists 1000 gram. 1 kilometer. Kilo means 1000 meter. It means kilo means 1000 है. किलो का मीनिंग क्या है? ओनली 1000 है. आगे जो भी यूनिट होगा वो एज इट इज सरनेम रखा जाएगा. गॉट द पॉइंट? जैसे सरनेम होगा गुप्ता जी तो गुप्ता जी रखेंगे. गॉट द पॉइंट? यस. यहाँ मीटर है, मीटर आप पुट कीजिएगा. डन. जैसे मैं बोलूँ 1 किलो हाथी. 1 किलो हाथी तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप आर यू मैड? हाउ कैन यू से 1 किलो हाथी? आई एम नॉट सेइंग 1 किलोग्राम हाथी. I am saying 1 kilo hathi. 1 kilo. 1 kilo hathi means 1 kilo elephant. I am writing here 1 kilo elephant. What do you mean? 1k. 1k elephant. 1k मतलब क्या समझ रहे हो? 1000 elephant. I think easily you can relate this example. Yes. So k is the prefix. आप पीछे जो भी सरनेम जो भी यूनिट लगाएं वो एज इट इज रहेगा. ग्राम यहाँ तक ग्राम एज इट इज है. मीटर है. किलो का मीन्स है 1000. एंजॉय. यस. मूव करते हैं आगे. यस डियर स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट मेगा, व्हाट इज द मेगा? मेगा मीन्स मिलियन. 10 to power 6 mega. 10 to power 6 represented by capital M. Like that, megapascal 10 to power 6 pascal. Mega Newton 10 to power 6 Newton. Megagram 10 to power 6 gram. Got the point? Simple है. Yes. यहाँ से 10 to power 9 giga. It is representing by capital Z and having power plus 9. Very good. If we talk about 10 to power 12 tera. 10 to power 15 peta plus 15. 10 to power plus 18 exa representing by capital E. Have you observed that? Very good. बहुत बढ़िया. Have you observed that? बहुत बढ़िया. Very good. Yes. Now dear student, come towards negative power. Yes, there are negative power also. 10 to power minus 1 is representing by small d known as deci.
Yes, decimeter. What is the decimeter? If we take, we said 1 decimeter, then how many meter? So deci means 10 to the power minus 1 meter. Got the point? Remember always. And it is represented by small d. Got the point? Yes. If we talk about 10 to the power minus 2, this is the centi, and you are familiar with 1 centimeter. If we talk about 1 centimeter, so you write that सेंटी का मीनिंग क्या होता है? 10 to the power minus 2. प्रीफिक्स है. सेंटी जहां दिख जाए 10 to the power minus 2 अप्लाई करना. मीटर एज इट इज लगाना है आपको. Got the point? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. If we talk about 10 to the power minus 3, it is milli. MILLI, milli, small m, milli. If we talk about 1 mm, that is the 10 to the power minus 3 meter. Milli is the prefix. Okay, if we talk about micro, so don't be confused between milli and micro. Don't be confused between milli and micro. Milli having symbol small m, micro having symbol mu. Micro mu. Remember, put in your mind. Micro mu. Yes. So that is the 1 micrometer. Got the point? 10 to the power minus 6 meter. Got the point? Yes, 10 to the power minus 9 nano, small n, very good. And 10 to the power minus 12 pico, small p, 10 to the power minus 12 pico, like that. I said 1 picofarad, unit of the capacitance, electrical capacitance. So that will be 10 to the power minus 12 farad. Got the point? Very good, dear student, very good. Be attentive, be attentive. 10 to the power minus 15, femto, yes, femto. Small f से रिप्रेजेंट किया जाता है. Very good. 10 to the power minus 18, atto. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा o जनरल इनके और स्मॉल लेटर से ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है. इधर a एंड कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. +1 डेका, -1 डेसी. ठीक है, गॉट द पॉइंट. +2 that is the hecta and -2 centi. +3 kilo, -3 milli, and +6 mega. And here 10 to the power minus 6, what is micro? बहुत बढ़िया. Here 10 to the power 9 giga. Here 10 to the power minus 9 nano. Very good. Here 10 to the power 12 tera. Here 10 to the power minus 12 pico. Here 10 to the power 15. बोलो पेटा. Yes. इधर क्या आ जाएगा? पेटा कैपिटल पी है, कैपिटल पी है. और इधर आप पिको में कंफ्यूज मत होना, हो ना, और मिली और माइक्रो में भी कंफ्यूज मत होना. ठीक है. 10 to the power minus 15 फेम्टो, स्मॉल ऐप. 10 to the power minus 18 एटो, स्मॉल ऐप. जेटो तक भी जाता है, -24 +24 तक भी जाता है. सो देयर इज नो नीड. जनरली आपको जो ध्यान रखने यही रखने हैं. गॉट द पॉइंट. आइए इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं. रेडी? आई होप यू एंजॉय. प्लीज लाइक करें. Yes, dear student, we have some question. Let's pay your attention. Be attentive. Yes, 1 fermimeter. This is the fermimeter. So, what is fermimeter? Pay your attention. Fermimeter is the radius. You can the size of the nucleus. You can say the radius of the nucleus. Fermimeter is Fermi. Okay, and having 10 to the power minus 15 meter. The femto हमने अभी रीड किया था. 10 to the power minus 15 femto. This is the femto. This is the F लिखा हुआ है यहाँ पे, femtometer. It is also known as femtometer. And साइंटिस्ट के नेम पे, फर्मी साइंटिस्ट थे, उनके नेम पे ये रखा गया. इट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो प्लीज पे योर अटेंशन. इट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, और यू कैन से रेडियस, है ना, यू कैन से न्यूक्लियस, रेडियस. ओके, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. दिस इज द फेम्टोमीटर, ऑल्सो नोन एज फर्मी. इसको हमने क्या बोला है? फेम्टो, एफ फॉर फेम्टो, एम फॉर मीटर. गॉट द पॉइंट? यस. 1 एंगस्ट्रॉम, A degree. What is the meaning of A degree? A degree means angstrom. So don't be confused. Okay, angstrom, and it means 10 to the power minus 10 meter. Must remember. Yes, dear student, must remember. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. Tell me, it is the size. It is the size of the atom. It is the size of the atom, or you can say radius, size of the atom. एटॉमिक साइज बोलते हैं. एटॉमिक साइज इस एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट की जाती है, और एटॉमिक जो रेडियस और साइज है, सॉरी न्यूक्लियस साइज और रेडियस है वो रिप्रेजेंट की जाती है किसमें?
Fermi meter में. Now can you tell me what is the 10 to power minus 15 meter is equal to how many centimeter? How many centimeter? Can you convert it? Yes, right here centimeter. Okay, now what is the meaning of centi? Centi means 10 to power minus 2. Go there, pay your attention, all of you, pay your attention. I'm writing here like that, 10 to power minus 13, 10 to power minus 2. Base same, power will be 8, total minus 15 है. Yes, 10 to power minus 2 को क्या लिखा जाता है? सेंटी. वेरी गुड. सो कैन आई राइट लाइक दिस? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 13 सेंटीमीटर. 10 टू पावर माइनस 13 सेंटीमीटर. सही है सुनो? यस. नाउ टेल मी व्हाट इज द एंगस्ट्रॉम इन सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में एंगस्ट्रॉम कितना होगा? तो 2 पावर हमने सेंटी में भेज दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 10 टू पावर माइनस 8. गॉट द पॉइंट? आर यू एंजॉइंग? प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर अपने राय दें. यस, 1 माइक्रो मीनिंग, माइक्रो का मतलब 10 टू पावर माइनस 6. बहुत बढ़िया. 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6 भैया कितना हो जाएगा? माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10 टू पावर माइनस 12. तो इसको क्या बोलते हैं? पिको फैराड. Am I right? 10 to power minus 6 means micro mu. This is the mu. And 10 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा. माइनस 6 माइनस 12 और माइनस 12 भैया क्या होता है? पिको फैराड. फैराड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. शाबाश. यस, 1 माइक्रोमीटर. बहुत इन mm में बताना है. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट पे योर अटेंशन. माइक्रो का मीनिंग 10 टू पावर माइनस 6 मीटर. You can write like this, 10 to power minus 3, 10 to power minus 3 meter. So 10 to power minus 3 को मिली आपने लिखा, मीटर ऑलरेडी है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 10 to power minus 3. Got the point? मिली का 10 to power minus 3, 10 to power minus 3, कंप्लीट कितना हुआ? माइनस 6. आई होप यू आर एंजॉइंग. वेरी गुड. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. वेरी गुड. 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो पास्कल? कैन यू टेल मी? यस, मेगा मीन्स 10 टू पावर 6. मेगा मीन्स 10 टू पावर 6. किलो मीन्स 10 टू पावर 3. तो 10 टू पावर 6 में से किलो ने 3 ले लिए, बचाएगा कितना? 10 टू पावर 3 एंड किलो का 10 टू पावर 3 कितना हो गया? 6. Got the point? All the best. Yes, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. हाँ, डोंट बी कंफ्यूज हियर. बच्चे क्या करते हैं? यह कंसिडर करते हैं कि ओनली स्क्वायर इज ओनली दिस मीटर. नो, इट इज ए कंप्लीट स्क्वायर. इट इज रिटन हियर बट इट इज ए कंप्लीट स्क्वायर ऑफ mm स्क्वायर. Got the point? It is complete square of millimeter square. Now tell me how many megapascal? Can you convert this? Ready? Yes, मिली का मतलब जानते हैं आप, 10 to power minus 3 मीटर होल स्क्वायर. व्हेन यू रिप्रेजेंट दिस 10 to power minus 6, 10 to power minus 6, नीचे 10 to power minus 6 रहेगा. अब जिसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 to power plus 6, और प्लस 6 को आपने क्या बोल दिया? मेगा. तो ये हो गया 1 मेगा पास्कल. ये कितना हो गया? 1 मेगा पास्कल. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ध्यान रखिएगा, 10 to power minus 3 मीटर का होल स्क्वायर 10 to power minus 3 का होल स्क्वायर करेंगे, आप क्या आ जाएगा? फटाफट बोलें, क्या आ जाएगा? ये 10 to power minus 6, माइनस 6 को ऊपर ले गया, प्लस का 6, प्लस के 6 को मेगा बोल दिया आपने, तो 1 रह गया. वेरी गुड. सेंटीमीटर को मीटर में बहुत ईजी है, 10 to power minus 2. सेंटीमीटर स्क्वायर, अब ये मीटर स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर कंप्लीट स्क्वायर है. तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 10 to power minus 2 का होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आ गया. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 to power minus 4 मीटर स्क्वायर. गॉट द पॉइंट? समझ पा रहे हैं? बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल में यही होगा. सेंटीमीटर क्यूब कितना आ जाएगा? टेल मी फटाफट से. सेंटी का मतलब 10 to power minus 2, क्यूब लगा दे, कितना हो जाएगा? 10 to power minus 6. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. इफ वी टॉक अबाउट mm स्क्वायर, मिलीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू? मिली 10 to power minus 3 and you are applying square power, so it becomes 10 to power minus 6. Enjoy? Yes, 10 to power minus 3 cube, so you will put the value 10 to power minus 9 meter cube. Very good dear student. बहुत बढ़िया. Be attentive, be active. I hope you enjoy. Yes, magic. Please wipe this and you like this. Yes, dear student. Now we are going to discuss about some conversion units, and there are very important
for the purpose of numerical, you can say 1 inch. Do you know what is the 1 inch? Inch also a unit of the practical unit of the distance. These are the practical units of the different quantity. This is the distance for, and this is volume, this is for time, mass and speed, and this is also for mass. So ready? Now dear student, 1 inch is equal to 2.54 centimeter. Got the point? If we want to convert it in mm, you know 1 centimeter is equal to 10 mm. 1 centimeter is equal to 10 mm and 1 meter is equal to 100 centimeter. I think you remember this. If you want to convert this in mm, then what will be 25.4 mm. 25.4 mm 1 inch. Got the point? Yes, very good. Now 1 foot, you can say that is the 30.48 centimeter, approx 30 centimeter, or if you want to convert it in inch, it will be equal to 12 inch. How can? Divide by 2.54 centimeter, divide by 2.54 centimeter, you will get almost 12 inch. Got the point? The one big steel scale, you know, एक बड़ा स्केल आता है स्टील का, प्लास्टिक का 30 सेंटीमीटर, that is the 1 feet. Yes, that is the 1 feet. And 12 inch also equal to that in terms of inch. Got the point? एक स्मॉल आता है जो 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, वो 16 इंच का होता है, एंड जो बड़ा वाला स्केल आता है स्टील का, that is 1 feet, or you can say 30 centimeter, or you can say 12 inch. Yes, now 1 yard अब जिसको गज बोलते हैं, ये almost 90 centimeter or 90 you can say 3 feet, you can say 3 feet. Got the point? It is equal to 3 feet. So when you multiply it, what will you find? At 3 24, 12, 4, 92 centimeter, almost 92.44 centimeter in actual value, you can say, or if approx you want to say it 90 centimeter. Got the point? 3 feet, almost 3 feet is the 1 yard, गज बोलते हैं. 1 mile, that is the 1.6 kilometer. 1.6 kilometer is equal to you can say almost 1600 meter. 1600 meter is equal to 1 mile. Yes. Now come on the volume unit. What is the volume unit? That is the liter. Liter is equal to 1 upon 1000 meter cube. Got the point? It is the unit of the volume, and it is equal to 1 upon 1000 meter cube. Simple है, याद रखिएगा, 10⁻³ meter cube. So which one is bigger, 1 meter cube or liter? So you can say that 1 meter cube is 1000 times bigger liter. अब ये इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 1000 लीटर हो जाएंगे. ऑब्जर्व करो, यहाँ से ऑब्जर्व करो, ट्राई करो, इसको मीटर क्यूब में फाइंड करना है, 1 मीटर क्यूब फाइंड करना है, तो 1000 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे? 1000 लीटर. गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से आप किसी भी एक कन्वर्जन को ध्यान रखें, किसी भी एक कन्वर्जन को आप माइंड में रखें, चाहे आइदर दिस वन और दिस वन, यहाँ से आप क्या कर पाएंगे? कन्वर्ज कर पाएंगे. दोनों याद रखेंगे तो लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो जाएगा. यस, तो याद रखें 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब, सिंपल. हाँ जी. 1 सीसी, सीसी का मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग? यस, वेरी गुड, सेंटीमीटर क्यूब. वेरी गुड, सेंटीमीटर क्यूब. क्या बोलते हैं इसको? सेंटीमीटर क्यूब. 1 सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब. सो सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब मीन्स power 3. So what is that? 10⁻⁻6 meter cube, micrometer cube you can say. And what is the sec? Sec is the unit of the time. ये ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर किया जाता था इसको. 1 sec is equal to 10⁻⁸ seconds. ओके, वेरी गुड. नाउ कम ऑन द स्पीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको डील करना ही पड़ेगा इससे काइनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में. 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड? हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड? बताइए फटाफट से. देखिए सिंपल है, 1 किलोमीटर का मतलब मीनिंग आप समझते हैं, 1000 मीटर के हावर्स में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड 1 आवर में. एम आई राइट? सेकंड्स की बात कर रहा हूँ. 60 मिनट हो गए, मिनट को अगेन आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 0 0 कैंसिल, इट विल बी
5/18 मीटर पर सेकेंड. वेरी गुड. सो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको, ध्यान देना. बताइए 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड. हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड, टेल मी. सर you can convert this by multiplying 5/18. Direct आप multiply करें, you will get what is this 18,315 meter per second. Am I right? Very good. I hope आपने को भी यही मिला होगा. Now if we say sir convert 36 meter, you can say 5 meter per second is equal to how many kilometer per hour. If you want to convert 5 meter per second in kilometer per hour, then multiply reverse. When you convert kilometer per hour into meter per second, you are multiplying by 5/18. If you want to convert meter per second in kilometer, then multiply 18 by 5. Simple है. So multiply by 5 into 18 upon 5. 5 will cancel. Your answer is 18 kilometer per hour. Got the point, dear student? बहुत बढ़िया. Be attentive. Very good. 18 kilometer per hour. शाबाश. Now come on the mass. What is the mass? मास का यूनिट kg होता है, ग्राम होता है, हाँ पाउंड भी होता है. दैट इज रिप्रेजेंट बाय LB एंड इट अप्रोक्स 0.453 kg. इन ग्राम यू कैन से 453 ग्राम्स. बिकॉज किलो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 3 डेसिमल गोज आउट यहाँ से. हाँ जी. AMU मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर मासेज, जो न्यूक्लियर एटॉमिक मासेज जो गिवन होते हैं वो AMU में होते हैं. फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक mass unit. Got the point? Very good. So it is having 1.66 into 10 to power minus 27 kg. Approx equal to mass of proton or mass of neutron. Approx 1 AMU होता है ना, 1 AMU जो mass of proton mass of neutron उसी के equal होता है approx AMU. Got the point? So please keep in mind these things. There is another 1 CCl. What is the meaning? This is the largest unit of mass. Largest unit